Good morning, class. Today I welcome you all on behalf of Rasa International School to study science of class 8th, chapter number 12, friction, part 8. It is on your book page number 177. In this video, we will discuss about the ways to reduce the friction. So, reducing friction. We can reduce the friction and make it advantageous for us. This can be done in the various ways. हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और इसको अपने लिए एडवांटेजियस फायदेमंद बना सकते हैं बाय द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द यूज ऑफ lubricants. Okay, so lubricant is a substance that forms a thin layer between the two surfaces in contact. जो दो सरफेस जिनके बीच में फ्रिक्शन है या रफनेस है जो आपस में कांटेक्ट में है. ओके, दोज हु आर इन कांटेक्ट विद each other. Okay, so the first surface and the second surface. So we are putting the lubricant, that is the oil, over here. I am showing the lubricant with red color mark. So lubricant is the oil over here. Okay, and it has been placed between surface number 1 and surface number 2. It decreases the irregularities between the surfaces and making them smooth. ये उन सर्फेसेस जो सरफेस हैं उनकी इरेगुलरिटी को कम कर देगा, उनको स्मूथ बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी. एंड इफ द इंटरलॉकिंग डिक्रीजेस द फ्रिक्शन आल्सो डिक्रीजेस. लुब्रिकेंट thus significantly reduce friction. Oil, grease, talcum powder are some of the common example of lubricants. Now you know that friction should be desirable, okay, to do certain things, and it is advantageous, but excess of friction is also being disadvantageous at certain places. Okay, so friction in door hinges sometimes make the door to squeak. Putting the few drops of oil reduce the friction and the seeking noise sound dismissed or diminished. Okay, the seeking noise sound get diminished. Okay, so let us the third last line, the seeking sound diminished means क्या होता है, कई बार दरवाजों के अंदर जो उनके जॉइंट्स होते हैं जिसपे जिस एक्सिस पे जो डोर हैं रोटेट करते हैं, ओके, दे मूव, sometimes it produce sound, and because of the putting some oil on that point or that axis of rotation, that sound diminished or get vanish. Why? Because of the lubrication. Okay, similarly, we sprinkle talcum powder on a carom board to reduce the friction between the striker and the carom board. कैरम बोर्ड पे हम क्या करते हैं, टेल्कम पाउडर डालते हैं so that the striker is able to move smoothly on the carom board. Why? So as to reduce the interlocking. Okay, that powder is act as a lubricant over there. This enables the striker to move smoothly on the board. Okay, so this reduces the friction. Now using of soap solution. The soap solution are slippery in nature. Soap solution कैसे होते हैं, slippery होते हैं नेचर में. Okay, if we wash our hand with the soap, you find that your hand will slip. Okay, and sometimes when we wash our hand, the soap get slip down from our hands. Okay, they are used to reduce the friction in high speed cutting and grinding machines. सोप सॉल्यूशन को कहाँ यूज किया जाता है, हाई स्पीड कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन में. ओके, सो व्हेन द पीपल यूज टू कट द मार्बल, दे यूज a water jet which consists of soap solution as to get what, to reduce the friction. Okay, so that not only friction is reduced but the heat produced during the process is rapidly taken away by the water present in the soap solution. इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो आपका फ्रिक्शन कम हो रहा है, दूसरा जब
कटिंग या ग्राइंडिंग हो रही है तो उस टाइम क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो वाटर is taking away that heat which has been produced at that spot along with it, because water having the high specific heat capacity. Okay, use of ball bearings. Okay, the ball bearings have been shown over here. The ball bearings are the small spherical balls placed between two moving cylindrical surfaces. Now this is the first cylindrical surface and this is your second cylindrical surface. Inside it there are the balls. Okay, there are the balls. So ball bearing are small spherical balls placed between two moving cylindrical surfaces. These balls roll between the two cylinders. These balls roll between the two cylinders, or you can say the cylindrical surfaces, and enable both these cylinders to move over each other instead of sliding. इससे क्या होता है, इसमें दो सिलेंड्रिकल सरफेस के बीच में बॉल्स को रखा जाता है, मेटल बॉल्स को। इससे ये दोनों जो सिलेंड्रिकल सरफेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करके क्या करते हैं, रोल आउट करते हैं। ओके, सो which enables, okay, the ball rolls between the two cylinders and enable both the cylinders to move over each other instead of sliding. Thus the ball bearing changes the sliding friction into the rotational friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, रोटेशनल फ्रिक्शन को में। हम जानते हैं सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की, उससे जो कम वैल्यू होती है वो स्लाइडिंग की, और सबसे कम जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन की होती है। तो हमने यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोलिंग फ्रिक्शन में। सो वी हैव रिड्यूस्ड द फ्रिक्शन which makes the movement easier. So ball bearings are widely used in the wheels of the car, cycle, scooter, motors, in the moving parts of the numerous machines. बहुत सारी machines के अंदर ये ball bearings use होते हैं। Polishing surfaces. Rough surfaces produce more friction than the smooth surfaces. जिन surface पे रफनेस ज़्यादा होने की वजह से इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। सो बाय पॉलिशिंग वी कैन मेक द सरफेस स्मूथ एंड इन दिस वे वी रिड्यूस द फ्रिक्शन। The next is improving designs. Fluid friction can be minimized by giving a streamlined shape to the object moving through the fluid or through them. हम फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, ड्रैग। ये किसके अंदर होता है, लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, जो सब्सटेंस उनके थ्रू मूव कर रहा है उसकी शेप को स्ट्रीमलाइन शेप बना दें। ओके, स्ट्रीमलाइन शेप इज द शेप which is narrow from the edges and broader from the middle. So I will draw a streamline shape which is narrow from the edges, these are your edges, and broader from the middle. Okay, so here you can see the width is more and here the width is less. So this is the streamline shape, just like a shape of a fish. Okay, thank you.